Good morning, everyone. A very good morning to all of you. I hope everybody is doing fine and you utilize this time to revise the things that we had covered. In case anybody has any kind of question, I want you to ask your queries, then we'll move forward. Jayanta beta, a very good morning. And somebody had a question related to pressure in the Telegram group. If you are present, then tell me and I'll try and explain the thing that you asked. And if you are not present, it means that you are not wanting that answer, and I'll move forward with the discussion that I'll be doing. Good morning, Suman beta. Shivani beta. Good morning, everyone. मैं ठीक हूँ बेटा. सौरभ. All good. Ankit, a very good morning. Usha beta, good morning. Vikrant, a very good morning. Chetan beta, a very good morning. Shivani beta, a very good morning. So everyone settle down, and somebody had a question in the Telegram group. Mukesh beta, खुश रहिए, I'm all good. All looks fine. Okay. The weather is changing very fast, so it is affecting everyone, and you also need to be careful about it. No questions? I don't see any question. Okay. So we'll start with the relevant discussion that we have to do. Okay. So people are like, they ask questions and they don't come back. Okay. If you want an answer, you have to be present. सब मजे मजे में पता चल जाता, पता होता तो ऐसा नहीं हो पाता है. Okay. So let us start with fertilizer. What is fertilizer? What you know about fertilizer? Good morning, Subham beta. Very good morning, everyone. Settle down. So what is fertilizer? सब जानते हैं? एटलीस्ट सुना तो होगा. Jayanta beta, this is something like you have to ask yourself if you are ready to do this hard work. Okay, always a pressure is going to be there. Okay. Good morning, Khushi beta. Jayanta, you have to understand, either take a break of few months, analyze if you want to work this hard or not. Okay, it is not going to be easy. Pressure is always going to be there. But someone who is only focusing on the pressure part, it is going to be difficult. ठीक है, ये easy नहीं है. आप IAS बनने की कोशिश कर रहे हो, आपको क्या लगता है जैसा मजे मजे में घर में पापा मम्मी ने दे दिया वैसा लाइफ है? You're trying to become an IAS officer, the toughest exam. Okay, so it will definitely going to have some effect, and this effect is what? You will not have time for anything else except studies. Okay, you have to do that. Okay, so don't feel the pressure, make it part of your life. ठीक है जयंता, just think कि ये करना ही है. Okay, सब कर रहे हैं, everybody is doing it, you are not alone. Everybody who wants to become an IAS officer wants नहीं, वो सिर्फ desire रखना नहीं है. Okay, who actually is thinking about achieving this thing, is working hard, and you don't have time for anything else. I don't know any individual who is enjoying everything and still getting it. Okay, अभी जाके पार्टी में
अच्छे कपड़े पहन के खाना खा लिया तो दिमाग से फ्री था, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ नहीं होंगे, टारगेट्स खत्म नहीं होंगे। अगर टारगेट खत्म नहीं हो रहा है तो आपकी पढ़ाई हो रही है, जिस दिन टारगेट होना चालू हो गया तो पढ़ाई नहीं हो रही। एनीबडी, इफ यू कैन डू 100 pages, keep a target of 120 pages. Okay, do not keep a target of 200 pages. Everybody knows what I can do in a single day. What is my capability? खुद को तो सच बताएंगे, ठीक है, बाहर की दुनिया को तो हम बोल ही देते हैं, मैं ये कर देती, ये कर देता। ओके, चांद तारे तोड़ लाते, ठीक है, इसरो ने हमारे वजह से ही वहां पे पहुंचा दिया, तो ऐसा कुछ भी कह सकते। बट सेल्फ ऑलवेज एनालाइज, राइट। खुशी बेटा, 1.5 years before you are going to give exam, okay, it is prudent if you have taken an early start, so prepare for 1.5 years of current affairs, though 1 year is also sufficient, but I'll advise you to go for 1.5 years. हाँ शुभम, your definition is good. Okay, so everybody is clear. Don't complain. Okay, find solutions. If you want to qualify in a single attempt, it means that you have to work very hard. And if you have to work very hard, it means that you'll not have time for anything else. कुछ और नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई के बारे में सोचेंगे। Okay? And still it is not like कि कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं, खाना भी नहीं खा रहे। Okay? Go for 7-8 hours. That is what at most one can do throughout the year. Okay? And these are all averages. Nobody can study for 12 hours every day continuously for 10 months. Okay? We average around 8, 9. Some of the days when you are feeling like आज पढ़ सकता हूँ तो 12-15 घंटे हो गए तो अच्छा है, वो ट्राई करना चाहिए। You should always try to maximize the time because you never know कि what next day will be. Vicky बेटा, very good morning. खुशी बेटा, you can broad news items you can go through. Okay, broad news items you can go through. Just read the articles, you can do that. Okay, and you'll understand when you start preparing. You'll go through current affairs, you'll understand. Okay, so you can read the news, you can make, not reading current affairs is not a solution, just read some of the broad news items. Okay, अभी आपका एग्जाम दूर है तो बड़े न्यूज़ को कवर कीजिए, उससे आपका काम हो जाए। ऊषा बेटा, निशान बेटा, आई एम ऑल गुड। सुमन बेटा, स्ट्रेस होता है क्योंकि पहले मैं आपके सवालों का जवाब दे लेता हूं, देन विल स्टार्ट। स्ट्रेस इज नॉर्मल, स्ट्रेस इज नॉर्मल while preparing because you want it. Okay, and there are two kind of stress. स्ट्रेस के दो टाइप के होते हैं तैयारी में। ओके, नॉट डूइंग इनफ, okay, and fail to achieve the target. Okay, अब यही दो टाइप के स्ट्रेस हैं। नॉट डूइंग इनफ, इट मीन्स दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम ओवर फोन, बात कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, घूमने भी भाग जा रहे हैं, तो नॉट डूइंग इनफ। तो दिस पीपल, आपकी ज़्यादा बुरी हालत है। इफ यू फॉल इन दिस कैटेगरी, नॉट डूइंग इनफ, okay, you'll take time. Maybe some of those people who are into this category, who are stressed because they are not doing enough, they'll leave preparation after some time. Okay, maybe they'll take 5 years. जब इस वाले कैटेगरी में आएंगे तब जाके चीज़ें होने लगेंगी। Okay, fail to achieve the target. Now this is going to happen because like I always tell you, 100 pages पढ़ सकते हैं, keep a target of 120. It will ensure that you reach 102 pages, some of the times 98, maybe some days 110, some days 90. So if you are into this category, chances are very high that you are going to clear in single attempt. These people
not doing enough. They need to remind themselves again and again कि क्या चल रहा है, क्यों कर रहा हूँ. Okay, and there will come a point where either you'll become this one or you'll leave the preparation. ये होता है. Okay, 70% of the people leave preparation within 2 years. Okay, those who start. Okay. Now stress, as far as of other factors, it can be related to family, friends, close friends. Okay, like not having social interaction. तो ये वाला क्या है कि 6.5 days पढ़िए. I always ask people to invest 6.5 days, half days per week, family, friends and everything. Okay, you don't have to leave everything, you have to be with your friends and family. और ये half days full fledged, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं सोचिए, करिए. और बाकी 6.5 दिन में भी क्या है, over phone call you'll talk to your parents and everything. Just do waste more time. Okay. हाँ Ankit beta, it is like state services are factual. You have to cram a lot of information and that will happen with revision. The more you revise, you'll remember the dates and everything. So it will become easier for you. हाँ सेकंड वाले बच्चे को ज़्यादा दिक्कत नहीं है. You are on target. Those who fail to achieve target, not a problem. Okay, you'll be able to achieve your target. So let's come back. Let's come back to the real discussion. Fertilizer. So fertilize. Okay, the word when you look at fertilize, what is fertilize? Okay, it is a term of science. Okay, fertilize क्या है? When two things mix and they help in the growth of a new life form. Okay, जो egg होता है, okay, sperm होता है, they fertilize and they give a new life form. So fertilizer is something which is not giving a new life, but actually helping the growth of the new life form. Okay, and many a times people use the terms like manure and fertilizer interchangeably. That is not true. Whenever we are using the term fertilizer, okay, in the perspective of agriculture, actually you are considering something which is a synthetic product which is produced by chemical synthesis. Okay, natural नहीं होगा वो. Fertilizer is not natural. Okay, it has been derived from some chemical process and which is actually helping in the growth of the plants. Okay, and in agriculture certain amounts of these chemicals are to be given to the plants so that they can grow well, to the crop so that their growth and productivity increases. Okay, हाँ खुशी बेटा, you'll be able to manage everything. Revision is the key. That technique works 100%. ठीक है, you'll remember more than 95% things. That is hard way of doing it, but absolutely you'll benefit from that. Okay, so fertilizer. Now if we talk about plants, okay, they need various kind of nutrients. जैसे हमें भी चाहिए होता है. You need vitamin A, B, C, D. ठीक है, you need protein, you need carbs. So food which helps us to sustain ourselves. In the same manner, plants also require some of the nutrients. Okay, basically nutrition जो है, this is required. Some of them are called as macronutrients. Okay, which are required in large quantities, and some of them are called as micronutrients that one requires in lesser quantity. ठीक है, मैग्नीशियम हमें चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, सल्फर, बट अलग से तो मैग्नीशियम नहीं खा रहे हैं आप. Okay, so micro quantities are even
sufficient. Okay, so fertilizer is something which tries to provide the plant with these important essential nutrients so that the plant can grow and produce maximum. Okay, now if we talk about the nutrients, like I said, some of the nutrients are required in large quantities, some in small quantities. Okay, but the source of these nutrients is what? The very soil where the plant will grow. Okay, and most of the time, initially if you see, most of the time people used to put manures, natural things, okay, which used to degrade, and finally they used to provide the soil with the important nutrients which the plant required. But that method has a problem. We never checked how much nutrient, which nutrient is actually going into the soil. Okay, so with this fertilizer, initially people discovered that some of the nutrients are more important. Okay, for example, nitrogen, इनको ज़्यादा चाहिए. Okay, and nitrogen is something which is associated with greens. Okay, if something is live green है तो उसमें nitrogen है. But most of the time when you are putting something in the soil in the form of manure जो हम कहते हैं, okay, anything that is some biodegradable material that you put in the soil, that is mostly dead content. So this nitrogen which was required was not reaching there. So artificially, initially people started with nitrogen, then potassium. Okay, and more studies happened, and today we provide combinations. ठीक है, NPK is the most popular thing. It is required in the most quantities. ठीक है, तो आपने ये NPK सुना भी होगा. Okay, so we'll be discussing all these aspects in this one. Okay, हाँ अंकित बेटा. So soil test and everything, आज तो बहुत आगे चले गए, but still most of the people are not prudently using this. There is regional disparity in the usage, over usage of some of the nutrients, which is actually negatively affecting the soil and plant and other life forms in the long run. Okay, so we'll talk about all of that. Okay, अब इसमें क्वेश्चन जो है वो इनपुट्स में आ सकता है, और सम एनालिसिस अबाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर. ओके, वेरी बेसिक क्वेश्चन कैन बी देयर, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा. ओके, बट स्टिल राइट डाउन फ्यू लाइन्स. Fertilizer has become an integral part of agriculture. Fertilizer has become an integral part of agriculture. Integral part of agriculture. As with technology, and high intensity cropping, as with technology and high intensity cropping, the soil loses the nutrients fast. The soil loses the nutrient fast. As the soil loses the nutrients fast, and within a short span of time, it is not possible to replenish these nutrients naturally. हाँ अंकित बेटा, ऐसा होना चाहिए पर होता नहीं. okay? Naturally. okay? इस पे क्या है, नेचुरली ये रिप्लेनिश नहीं हो सकता है, बट क्रॉपिंग इंटेंसिटी यू कैन नॉट रिड्यूस बिकॉज ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन. ओके, एंड एवर इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लैंड. लैंड इज ए स्कैर्स रिसोर्स, कम होता जा रहा है. ठीक है, बहुत सारा लैंड तो है नहीं जो प्रोडक्टिव है,
उसी पे घर भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है. Every infrastructure is coming up on the same piece of land which is fertile. Okay, so the only way you can feed the huge population is by increasing the production. Okay, so fertilizer is added and we try to achieve this thing. Write down, with the increasing population, with the increasing population and virtually non-existent possibility of and virtually non-existing possibility of extension of the cultivated areas, possibility of extension of the cultivated areas, there is a need to increase the cropping intensity. There is need to increase the cropping intensity. There is need to increase the cropping intensity, for which fertilizer forms, fertilizer works as a vital input. Fertilizer works as a vital input. Okay. Now, like I said, there are some macronutrients and micronutrients. So 13 nutrients are there. Basically, plants require 13 nutrients. ठीक है, साइंस में पढ़ते हैं आप, बायोलॉजी में, ठीक है, तो वहाँ पढ़ेंगे क्या क्या है, नाम वाम याद कर लेंगे. okay, बायो में यूजुअली काम आता है, बट वी आर मोर कंसर्न विद द पॉपुलर वंस. ओके, नाउ सम ऑफ द मेजर सोर्सेस, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस की अगर हम बात करते हैं तो 3 ऑफ देम NPK इज रिटन हियर, जिंक एंड सल्फर. ओके, तो 5 सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये एडिशनली दिया जाता है. ओके, नाइट्रोजन, पोटाशियम, सोडियम भी दिया जाता है. ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं दिए जा रहे हैं, बट मोस्टली इट इज देयर. एंड नेचुरली यू हैव सीन सॉइल्स, जब हम पढ़ रहे थे तो आपने क्या देखा है, दैट नॉट एवरी सॉइल इज हैविंग, मोस्ट ऑफ द इंडियन सॉइल्स लैक इन व्हाट, दे लैक इन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन इज in most demand because most of the soil varieties that we have, they naturally do not have nitrogen, barring some of the PT soil and everything, they have more nitrogen, but alluvium, black soil and everything, you'll see that they do not have nitrogen. Okay, so write down, different soils require different nutrients due to differing deficiencies. Different soils require different nutrients due to differing deficiencies. Due to different deficiencies. Okay. And hence fertilizer becomes all the more important. And hence fertilizer becomes all the more important. Okay. Now, is it the only reason that we need fertilizer? क्या आपको ये लगता है कि it is the only reason? Need of fertilizer पे अगर कोई पूछता है, okay, first and the major reason is soils are deficient. In some of the nutrients. Okay, but the type of crops that people are choosing, the type of seeds, seed के बारे में हमने बात की थी, it also determines. Okay, अब seed कैसा है,
high yielding varieties. Okay, the use of high yielding variety seeds. One thing which is very specific about these, they require more nutrient than traditional ones. And they require more irrigation and everything. Okay, so inputs, high yielding varieties, why they yield high? Because they are a type of plant which require lot of nutrient. More the nutrient, they grow better. Okay, so use of this thing is also there. Plus, today population pressure is there. More cropping intensity. Naturally, the soil degradation and loss of fertility is visible over a period of time because of the lack of moisture in different regions, deforestation and everything. What it has done? It has done this thing. Okay. Clear है? Okay. Everyone. Now, why people are using more fertilizer? ऐसा सवाल आ जाए. Okay, if you are to analyze, ये तो need है. Okay, this is pressing need. More use of fertilizer. इसी में अगर जोड़ देते हैं, if the question is more use of fertilizer, ये सारे points होंगे या नहीं होंगे? Okay, more use of fertilizer because soils are deficient. This is there, this is there, this is there. What more? What more? सिर्फ इतना ही नहीं है. नीड की बात करेंगे तो नीड एंड the reason that we required this, need के ये reasons हैं. But why people are using more? Because of some of the things that has happened in the recent past. Okay, agricultural credit is easily available. So they use fertilizer. Government has some of the policies like they declare MSP. Okay, and MSP is mostly declared for those varieties which have high yielding varieties. ठीक है, ज़्यादा production होगा, government price भी guarantee दे रही है. So people are adapting to those kind of things. Okay, because certain attraction is also there in the form of credit and MSP. Okay, तो जब दोनों चीजों पे अलग अलग, यही क्वेश्चन क्या है, थोड़ा बदल के देता है तो you have to add few more points. Okay, plus more usage, dissemination of information is easy today. Awareness है लोगों में, dissemination of information and awareness. Okay, more usage, there is पहले सब्सिडी था, then other institutional support. Okay, for using it, government itself pushed it. Okay, so थोड़ा सा एस्पेक्ट बदला तो क्या है, आपके पॉइंट्स और अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास हो जाते. So whenever you are
in exam hall you have to understand कि what exactly is being demanded. ठीक है, उसके हिसाब से आप ये करेंगे. Plus the people who are not using fertilizer, they feel like they are losing on something. ठीक है, उनके जमीन में चाहिए भी नहीं. It is not necessary that they never check whether my land has lack of nitrogen. Okay, but they buy fertilizer because they think everybody is using, I have to use. Okay, so this is something also that you can write about. ha Subham beta, the mindset. Okay, now so factors affecting fertilizer use. ठीक है, ये कई बार पूछा गया. तो factors affecting fertilizer use नीड बेस्ड हो सकता है या फिर ये रीजंस को. ओके, फैक्टर्स इसी को अलग तरीके से कैसे पूछता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फर्टिलाइजर यूज. अगेन यू हैव टू राइट दिस थिंग. you have to explain these points only. Okay, now यूजेज एग्जैक्टली कितना है, more than 4,000 per hectare in some parts of India, in some parts of world. Zero usage in some parts of India, in some parts of world. Okay, so as far as the exact data is concerned, okay, like I always tell you, you have to use the data from economic survey. ठीक है, वो करंट वाला हमेशा बना लेंगे. Okay, so what we are going, Indian perspective. Some of the things which you can use later as well. Okay, वो हम बात कर लेते हैं. Okay, and some of the data like we will be using is from Fertilizer Association of India. Okay, so source Fertilizer Association of India. Okay, mostly you will be focusing on economic survey. ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ बार बार, एग्रीकल्चर चैप्टर उसमें होता है इकोनॉमिक सर्वे में. यू हैव टू फोकस ऑन दैट डेटा. सम एक्स्ट्रा डेटा आई एम गिविंग यू. ओके, यू डोंट नीड टू सर्च मोर. बहुत सारे लोग क्या है कि सर्च में ही लग जाते हैं कि और डेटा और डेटा. यू डोंट नीड दैट. ओके, सो इफ यू लुक एट द यूजेज, ओके, इफ यू टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ द फर्टिलाइजर. ओके, फर्टिलाइजर की यूज की अगर हम बात करते हैं, सो फर्टिलाइजर एसोसिएशन of India tells us that this usage was not much more. Okay, if we look at the scenario before 2000, it was restricted to only certain areas. ये कुछ ही जगहों पे क्या है, limited था. Okay, and the average अगर हम मानते हैं कि it is let's say 200 kilograms per hectare, 150 kilograms per hectare. Okay, so we are slowly increasing. Okay, किलोग्राम पर हेक्टेयर में अगर हम देखते हैं यूजेज, इंडिया इज सीइंग सब्सटेंशियल जंप. ओके, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से अभी भी बहुत कम है. एंड देयर इज डिस्पैरिटी. ओके, सो टोटल फर्टिलाइजर यूज इफ यू लुक एट, ओके, तो सो दिस इज सम ग्राफ, इट इज इंक्रीजिंग. ओके, स्टिल ड्विंडलिंग था जब अवेलेबल नहीं है, एंड दिस इज समथिंग that we are showing. And mostly the growth that we have seen, okay, yet and this is total. So nitrogenous fertilizer has seen maximum growth and it is still increasing. इसकी कोई कमी नहीं आ रही है. Total sometimes less usage, but overall still nitrogen was popular. Okay, तो ग्राफ में टोटल में नीचे चला गया, मतलब ये नहीं है कि ये यूज नहीं हुआ. देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन डायरेक्टली नाफ्था यूज करके. ओके, इफ यू टॉक अबाउट अदर्स, देन पी एंड मोर
recently. K is also, so NPK is at top. ठीक है, and will always use diagrams which are easy. इसके लिए कुछ अलग से prepare नहीं करना है. You don't need to prepare anything. Okay, using this graph we have shown that the fertilizer usage is increasing. Okay, and I keep telling you this thing. अगर हम इस point को, ये graph दिख रहा है, since 1950 if we talk about, ठीक है, ये end वाले point को 1950 मान लीजिए, this extreme point. Okay, and all the growth that we are seeing, this point को हम मान लेते हैं 2023. This is the year. So it is still increasing. In exams, you need to use those kind of graphs and things that you can remember. ठीक है, बहुत टफ वाले नहीं करने हैं. बढ़ रहा है हमें पता है ना, and this graph shows कि बढ़ रहा है, हो गया. Okay, and most of the people don't show this thing. वो क्या है, लिखने में busy हो जाते हैं. So simple graphs, present it. It shows that total utilization has increased a lot since 1950. Highest NPK, they are also growing, but top पे N चल रहा है. Okay. And this is geography. You need to use such things. ठीक है. How to present the thing is more important. क्योंकि ज्ञान क्या है, फर्टिलाइजर का ज्ञान लेके आप किसान नहीं है ना, आपको साइंटिस्ट बनना है. So you need to know how you will be presenting the things. Okay. Now, if we talk about the percentage which is being used, okay, अगर हम distribution को देखते हैं NPK में ही, most important वाले. Okay. So N जो आपको दिखाई दे रहा है, this is, okay, it dominates. Almost 63% usage is of this one nutrient only. Okay, NPK is more popular, the combination, but आपको ये समझना है that people prefer N the most. Okay, even if they require it or don't require it, सबसे ज़्यादा यही है. Second number पे approximately 26%. So this is less than even half. Okay, and the K third one which is popular is approximately 11.5%. Okay, so if we talk about the NPK usage in our country, the ratio is this. Okay, but ये क्या है? This is just an average. Okay, this is simply an average. Now if we look at the fertilizer consumption trends in India, okay, ट्रेंड्स पे ही हम बात कर रहे हैं. दो previous data also is indicating सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता होगा. Okay, if we divide the country, let's say, into eastern region, eastern India, western India, southern India, northern India, what do you think? सब equally यूज कर रहे हैं? Do you think that every part of India is actually utilizing? हरियाणा, पंजाब. ठीक है, धीरज बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लिटिल लेट. Okay. And eastern, it means we are considering the northeastern part as well. Okay. हाँ विकी, ये नॉर्थ में आएगा ना, we as per the bifurcation that we are using. So northern region, okay, uses around 34.1%. Okay. अब इसको क्या है, एग्जाम में 34 ही लिखेंगे. आई एम गिविंग यू द एग्जैक्ट फिगर, बट इन एग्जाम यू वांट टू मॉडिफाई इट ए लिटिल एंड यू हैव टू. अगर साउथ की बात करते हैं 24.7%.
Okay, if we talk about the western part, it is slightly higher than the southern part, 25.7%. Okay, and eastern part is only around 15.5%. So it is not, the usage is not proportionate. ठीक है, हमने पहला क्या देखा कि not every nutrient is utilized in similar proportions. Now the second thing that we are looking at is that not every area is using fertilizer. अब यहाँ क्या है, अगर सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन आप पूछेंगे क्यों है, दिस इज वीट ग्रोइंग एरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन. ओके, सो नॉर्थ इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द farmers are aware this is an area where green revolution actually started. Okay, so they are using most of it. Okay, यहाँ क्या है, लो adoption of HYB. Okay, आज भी क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज बहुत ज़्यादा अडॉप्ट नहीं की गई है ईस्टर्न पार्ट. सम ऑफ द स्टिल major, many parts, many areas used natural methods. Technology भी ज़्यादा involved नहीं है. Okay, so this was the reason that Sikkim, Arunachal Pradesh, they automatically declared themselves as natural farming regions, organic farming regions, क्योंकि वहाँ HYV, no fertilizer, nothing was being used much. Okay, and these regions, western India and southern India, the adoption is only limited to those areas which use high yielding varieties. Adoption in those areas who use high yielding varieties. Okay, कैश क्रॉप्स, जहाँ प्रॉफिट है. okay? अब देखिए क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है. इट इज नॉट लाइक ये डेटा आपको पता है, लेट अस ट्राई टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन you can find in exam. Okay, analytical question, anything. अभी यही डेटा will use and will try to give an answer. Okay, analyze the consumption patterns of fertilizer. Consumption patterns of fertilizer in the country. And highlight the disparity in its usage by listing the reasons. Okay, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लोग बोलते बहुत टफ पूछ दिया. Okay, we have not written many statements, but now we'll use that fact and we'll come out with lot of diagrams, statements, everything. ठीक है, ये हम करके देखेंगे practically how you can write. When I tell you to collect some of the data, how to use it, you'll see here. मुझे बताइए इसका आंसर लिखने में अभी सक्षम है कि नहीं आप लोग. How many of you feel that you can write? हमने ये पढ़ लिया है जिससे ये लिखा जाए. कितने लोगों को लग रहा है?
क्या लिखेंगे? What will be your approach? थोड़ा थोड़ा मुझे बताइए everyone. Okay. Now, consumption patterns of the fertilizer in the country. Patterns कैसे हैं? Okay, all the data that you have. Okay, वही पूछ रहा है. So different usage in different parts of the country. Plus दोनों के बारे में लिखेंगे. How some of the nutrient is more focused, how some of the nutrient is less focused. Okay, both the aspects. हाँ विक्रांत बेटा. अभी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है. देयर इज डिस्पैरिटी की अगर हम बात करते हैं. ओके, पैटर्न्स यू हैव द डेटा. डिस्पैरिटी इन टू टर्म्स. डिस्पैरिटी with related to nutrients, disparity related to region. Okay, जगहों में अंतर है न्यूट्रिशन में. ओके, यहाँ क्या है? एन मोर प्रेफर्ड. ओके, हाँ हाँ ठीक है. अंकित, यू आर गोइंग गुड. नाउ सम ऑफ द थिंग्स दैट यू नो. हमने इरिगेशन पढ़ा. व्हेन यू आर लिस्टिंग द व्हाई रीजन्स आर नॉट यूजिंग इट. इफ इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल, हाई यील्डिंग वैरायटी यूज ही नहीं करेंगे. सो सम ऑफ द रीजन्स जो इसमें मैंने लिखे नहीं है, बट स्टिल यू कैन थिंक ना, ये कैसे जगह है. दिस इज इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ईस्टर्न वाले को अभी छोड़ देते हैं. ओके, सो ड्राईलैंड फार्मिंग है. सो इरिगेशन फैसिलिटी इज नॉट देयर. तो दूसरे टॉपिक में भी जो पढ़ा है वहां से भी पॉइंट लिख सकते हैं. okay, disparity is there because dryland farming, if no irrigation facility, HYV cannot be used. Okay, so low adoption, no irrigation, low adoption of high yielding variety. Okay, so regional disparity अपने आप हो जा रही. Some of the regions are like what? Okay, inadequate supply. ठीक है, infrastructure is not well developed to help the fertilizer to reach every place. Northeastern people awareness भी एक कारण है. Northeastern states, the awareness was not there. Okay, infrastructure was not well developed. You need certain infrastructure. Okay, in some of the regions even the credit facility is not there. Okay, so it is not like कि जो दूसरे topics में हमने problems की बात की है, you can talk about all those things. You have data, you need to talk about. Okay, अभी ideal ratio क्या है? Now nutrient ideal ratio is 4:2:1. This is what is recommended for N is to P is to K. लेकिन इसको क्या हुआ, लोगों ने फिक्स मान लिया. ओके, इससे ये समझा कि नाइट्रोजन हमें बहुत सारा यूज करना है, उससे थोड़ा कम ये. बट द inclination of the people towards nitrogen is so much that in India the ratio happens to be 7:2.8:1. Okay, average
decadal ratio. Okay, now Fertilizer Corporation of India says that जहाँ 4 recommended है वहाँ 7, 2 है तो 2.8 K is like being used. Okay, so and this is why, because of the perception that every soil requires more nutrients. Okay, even those soils where nitrogen is not required, people are giving nitrogen. Okay, now यही question अगर पूछे, the same question को थोड़ा घुमाते हैं, ये समझ में आया? हाँ, नॉलेज, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, एवरीथिंग. ओके, द रीजंस दैट यू आर गिविंग. अब हमने वर्ल्ड के बारे में तो पढ़ा नहीं है, लेकिन यही क्वेश्चन बदल के वो वर्ल्ड से पूछ ले. ओके, द कंजम्पशन पैटर्न्स of fertilizer is not same everywhere. In world. Okay, analyze the various reasons behind it. Okay, now you have not read anything related to word. मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है? आपने कहीं से पढ़ा हो तो पता नहीं, एटलीस्ट मैंने नहीं पढ़ा है. ये लिख सकते हैं कि नहीं? Okay, I'm showing you कि that how you can manage things. जो knowledge है, everybody is रनिंग बिहाइंड डेटा फैक्ट, मिल जाता तो, वो नहीं है तो कैसे लिख लेंगे? बिकॉज सेकेंड पेपर क्या है, सेकेंड पेपर में भी सेक्शन बी में भी द चैलेंज इज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि हमें नहीं आता है, एंड दिस इज अ रेगुलर थिंग. बस थिंकिंग प्रोसेस ठीक कीजिए, अभी सबको लिखना आता है. The consumption pattern of fertilizer is not same everywhere in world. Analyze the various reasons behind it. You have not read it. लिख सकते हैं या नहीं? इंडिया के बारे में आपको पता है, वर्ल्ड पे क्वेश्चन आ गया. People see these kind of question and they get stumped in exam कि I had not prepared and suddenly I found that question, मैं कैसा लिखूंगा? They leave, they go for direct questions. अभी वर्ल्ड में रीजंस डिफरेंट हो जाएंगे क्या? रीजन सेम रहेंगे ना? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर इन द कंट्री और इन द रीजन, year to year fluctuation in demand. Okay, awareness is not there. Same reasons है. Okay, और हम जानते हैं कि हमें नहीं पता है कि which country is using more or less, but you know हमें क्या पता है कि at commercial level USA is doing, okay, रशिया इज डूइंग, यूक्रेन इज डूइंग, ये हमने कई बार बात की है. दे ग्रो वीट, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन रशिया यूक्रेन वॉर से कम हो गया, हमें पता है. तो पंजाब हमारे यहाँ क्या है? पंजाब हरियाणा, अभी अभी आप लोगों ने ही बताया था कि दे आर यूजिंग मच. ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स यू हैव टू रिफ्लेक्ट दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो. और वो कैसे होगा? जब एनालाइज करेंगे. Even in parts of India, okay, Punjab and Haryana are using fertilizer as par with some of the Western nations like America. Okay, so when you write this thing, ये यहाँ प्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा अवेयर हैं, तो ये लगभग उतना यूज़ कर रहे होंगे जितना डेवलप्ड बाकी जगह लोग कर रहे हैं. ओके, एग्जैक्ट नहीं है पता है हमें, बट
समवेयर नियर बाई होगा तभी तो इतना डेवलप्ड है ये. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ शुभम बेटा, यू कैन टॉक अबाउट दैट, बट दैट अफेक्ट लेस. उसका इफेक्ट कम होता है. एंड दिस इज द थिंग दैट आई कीप टेलिंग यू, इफ यू विल फोकस ऑन थिंकिंग. ओके, और हम जब भी डेटा इज डिफरेंट थिंग, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट कैन बी एनीथिंग. पंजाब एंड हरियाणा यूजिंग as much as probably some of the provinces in China are doing, USA are doing. Okay, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए किसी को. And this is the reason that they are doing well. Okay, so some parts of China, USA, in India, disparity is there, and this is world का भी compare कर रहे हैं. You do not have any other fact, but this fact you are aware of, but most of the people fail to utilize such things, जो पता भी है. Okay, now of course if it is like हमें पता हो कि 3096 किलोग्राम पर हेक्टेयर हो रहा है, तो that is good. ठीक है, और नहीं याद है तब भी you can use such things and you can write answer, and that will be a good answer. Okay, again you will be helped by economic survey to get the data. वर्ल्ड कंपैरिजंस के डेटा भी आपको मिल जाते हैं कि दिस इज द फैक्ट फ्रॉम ओल्ड वन. ठीक है, इस बार वाला, अगली बार क्या है वो चेंज होगा, तो अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा लिख लेंगे. ओके विकी, एवरीवन इज क्लियर और नॉट? ओके, नाउ डू यू थिंक दैट all the countries have all the nutrients? Because it is, मैंने शुरू में ही क्या बोला, it is synthetic. Okay, even for India. Do you think that we have all the things that we require? आपको ऐसा लगता है? Okay, you'll get more points. Agriculture क्या है, आप और अच्छा लिख पाएंगे जब हम इंडस्ट्री कवर करेंगे. In industry we'll see some of the basic raw material. But in this chapter, I'm trying to help you to imagine, okay, to come up with points yourself, not being dependent on certain book or notes. क्योंकि सोच पाना बहुत important है, and this is what you'll require when you appear for the exam. Okay, क्योंकि these are the topics जिस पे हल्ला होता है कि बड़ा tough question आया है. ये general statements आते हैं, and people are like ये तो पढ़ा ही नहीं. हाँ ठीक है. So one of the major reasons for India and for this thing, okay, we do not have sources of potash. Much potash नहीं है हमारे पास. We import. Okay, we import. When we'll deal with the fertilizer industry, then you'll have much more points to deal with this. ठीक है, जब हम इंडस्ट्री में फिर से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़ने वाले, we'll talk about fertilizer in more detail there. But even without that data, वो चाहूँ तो मैं यहाँ भी दे देता आपको. But I just want you to know that without even collecting this thing, you still are in a position to write a good answer if you can analyze the things. Okay, data from current affairs or some other chapter, you'll definitely get it. But हमारा क्या है, मोटो ये होना चाहिए कि हम अपनी समझ पे लिख पाएं. Okay, so everybody is clear or not? हाँ के बेटा, यू कैन टॉक अबाउट दैट एरिया. आपकी गलत फहमी है, दे यूज इट. ठीक है, दे कमर्शियल प्रोडक्शन में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आज की डेट पे एडिशनल न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं. दो प्रायरीज आर वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वंस, बट केमिकल्स आर यूज्ड देयर आल्सो. ओके, मोस्टली नाइट्रोजन नहीं देना पड़ता है. Okay, but some of the chemicals, of course, they use. हाँ okay बेटा, those kind of things you can add. अब जहाँ स्टेट का सपोर्ट होगा, okay, any country which is supporting their farmers, subsidy and everything, India perspective में those kind of countries will use more. But WTO provisions stops from giving subsidy, and some of the countries
डू नॉट हैव इनफ मनी, ओके, दे आर पुअर कंट्रीज। तो पुअर कंट्रीज क्या है, वो खाने के लिए पैसा नहीं है तो फर्टिलाइजर तो नहीं यूज कर रहे। मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका वेरी लेस यूजेज। तो वर्ल्ड डिस्पैरिटी जो आपको पता है, ओके, व्हाट द वर्ल्ड डिस्पैरिटी, उसको देख के भी आंसर लिखा जा सकता है। okay? दो यू विल बी गेटिंग मच मोर फैक्ट्स व्हेन वी स्टार्ट विद फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो और फैक्ट होंगे, बट हियर आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू थिंक। ओके, मिनिमम डेटा, थिंकिंग प्रोसेस, सम ऑफ द कंपैरिजंस यू कैन कम आउट विद। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ इंडस्ट्री में भी पढ़ा सकता था कि फर्टिलाइजर यहाँ छोड़ भी देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आई वांटेड यू टू सो दैट सेम इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू कम आउट विद आंसर। फैक्ट्स थोड़े होने चाहिए, हैं तो अच्छा है, नहीं है तो डरेंगे नहीं, यू कैन स्टिल राइट ए गुड आंसर। ओके, के बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर। गाय फर्टिलाइजर नहीं खा रही है, लिखेंगे न्यूजीलैंड में। ये दोज रीजन्स आर डेयरी, डेयरी का रिलेशन कुछ नहीं है फर्टिलाइजर से। ओके, ऐसा जाते जाते कहाँ तक चले गए वो नहीं करेंगे। ओके, तो दिस टॉपिक विल अगेन लाइक आई सेड इंडस्ट्री में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लैंड रिफॉर्म्स। How many of you think that we achieved success in land reforms? जब हम आजाद हुए थे तो क्या था, टैक्स का सिस्टम कैसा होता था? स्टेट वाज नॉट गेटिंग द टैक्स डायरेक्टली। ओके, जमींदार के भी साथ क्या था, देयर वाज इंटरमीडियरी। Okay, and then the people who were actually doing the work, working cultivator, and then agricultural laborer. Okay, so land reforms क्यों हुआ था? The main reason was to remove this के स्टेट और कल्टीवेटर के बीच में ये ना रहे। This was the reason that land reforms were okay done, और इसमें यही किया गया था। This part was abolished. Okay, जमींदारी system was abolished, and the target was to make sure that there is no intermediary. पर क्या ये अचीव हुआ? Okay, 3 measures were taken. क्या क्या थे? Anybody has idea? इकोनॉमी भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी अगर आपने पढ़ी है, भूदान मूवमेंट, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। शुभम बेटा बिल्कुल नहीं, लैंड रिफॉर्म्स वाज नॉट अचीव्ड। ठीक है, इट वर नॉट अचीव्ड। सिर्फ एक चीज यही सक्सेसफुल हुआ था। लैंड रिफॉर्म में 3 मेजर्स थे। एबोल्यूशन ऑफ द जमींदारी, इंटरमीडियरी, ये एबोल्यूशन होने से क्या हुआ, अब लोग जमींदार नहीं कहे जाने लगे। लेकिन जमींदारी थी क्या? द रियल प्रॉब्लम वाज दे हैड लार्ज चंक्स ऑफ लैंड बिकॉज ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ए फ्यूडल सिस्टम। दे ट्राइड टू एस्टेब्लिश व्हाट वाज इन यूरोप। ठीक है, यूरोप में क्या है, लैंड लॉर्ड का सारा लैंड होता था और लोगों का नहीं होता था।
तो दे इंट्रोड्यूस्ड, हमारे यहाँ जमींदार क्या है, ही वाज बिग फार्मर. इट वाज नॉट लाइक एवरी लैंड बिलोंग्स टू मी. British tried to create this system with Mahalwari, okay, जमींदारी, different forms that you have seen. वो अपने फ्यूडल जैसा सिस्टम यहाँ बनाते थे, लोगों का जमीन छीन के जमींदार को दे दो, he'll pay the tax, okay. So that is, हाँ शुभम बेटा. Now this is सक्सेसफुल. इसे हम क्या मानते हैं, सक्सेस. टाइटल्स चले गए. नाउ ही वाज नॉट हैविंग द लैंड, दोज हु वर देयर, जो खुद खेती कर रहे हैं उनको मिलेगा, ऐसा कहा गया. तो इस चीज को अचीव करने के लिए क्या किया गया, रेगुलेशन ऑफ द साइज ऑफ द फार्म्स. The size of farms. Okay, now here three things were done. Okay, land sealing, जिसके पास जमीन ज्यादा है उसकी जमीन छीन ली जाएगी. Okay, if somebody is having more than what he can cultivate, the land will be confiscated. The second thing, consolidation. Okay, consolidation means some people, this is the farmland, एक जमीन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है. Okay, so government wanted कि ये exchange कर लो. Okay, so somebody else will provide his land, ठीक है, उतना ही दे दिया. somebody else provide this much. so this is consolidation. Okay, आपके गांव में सबकी जमीन एक ही जगह पे है, सबकी, आप लोगों की कोई ऐसा नहीं है जिसके पास बहुत सारी जमीनें हो. Third one is cooperative farming. What do you think? इसमें क्या हुआ? Do you see people coming together and farming together? कि हम सारे भाई भाई हैं, पूरा गांव हमारी मिल के जमीन में खेती करते हैं. Okay, will not consider cooperative farming. होता है आपके यहाँ? Now again the government has come up with the concept of cooperative farming, but now this cooperation is ensured by the private sector because they pay a lot of money. But have you seen this thing? आपको क्या लगता है लैंड सीलिंग कितनी हुई होगी कंट्री में? ओनली 2%. बेनामी लैंड्स, कुत्ते के नाम पे जमीन का नाम कर दिया. बिल्ली के पास भी जमीन थी, लोगों को नहीं दी गई. जो ईमानदार थे खुद दे दिया उन्होंने. तो ऐसे 2% लोग थे कि दे सेड कि हाँ आई कैन नॉट डू इट. फोर्स करके किसी से ले नहीं पाएगी. बेनामी ट्रांजेक्शन स्टार्टेड. ओके, इन द नेम ऑफ द ऑक्स, डॉग, कैट, स्क्विरल, एवरीबडी हैड लैंड बट नॉट द पीपल. नाउ कंसोलिडेशन इज समथिंग, इनिशियली पीपल, ठीक है, भाईचारे में बदल लिया, बट 33% ही हो पाया. ओके, and this cooperative farming, none of the villages were ready to cooperate and farm together. Nobody came together. 0%. Do you think land reform was success? फिर से वही सवाल. How many of you think that land reform was successful now? Okay. How many of you think अब successful है? The third thing, like I said, reforms में 3 measures थे.
tenancy reforms. Now, tenancy reforms. This is regulating the rent, the money one can charge. Okay. Some of the people, do you think that right regulations were there? आज भी आपके गांव में फिक्स्ड रेट है जब भी कोई खेती के लिए किसी को देता है? Confirmation of tenancy rights. Okay. Confirmation of the tenancy rights का मतलब क्या है? Ownership. If cultivating for a very long period of time, okay, it was like 10 years. ये भी क्या हुआ? Most of the people did not get. ठीक है, जो बदमाश लोग थे वही ले पाए लड़ झगड़ के. Most of the people were like what? They never got this thing. Okay, safeguarding the tenant's interest. And if you have been to villages, do you think that any of this thing is still the government is regulating? The society itself is regulating. Okay, government का रोल दिखता है क्या आपको इसमें? कोऑपरेटिव फार्मिंग तो नहीं हो पाया. अमूल बिकेम सक्सेसफुल, ये आप कह सकते हैं. पीपल कोऑपरेटिव. हाँ धीरज बेटा. ओवरऑल दिस 4%, क्या ये सक्सेसफुल है? 4% अचीव हुआ, गवर्नमेंट डेटा खुद कहता है. $11 million tenants got the land. Okay, 11 मिलियन लोगों को मिला. So still anybody ऐसा लग रहा हो जिसे कि बहुत ही सक्सेसफुल हो गया था? So land reforms basically failed. Failed in India. Okay, achieving consolidation is not enough. Rest of the things, ये fail क्यों हुआ? What do you think? Failure of land reforms. Okay, and that too when some of the freedom fighters, what they were doing, they supported this. Okay, भूदान movement आपने पढ़ा होगा. पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं तो भूदान के बारे में पढ़ते हैं. Okay. Ankit beta, if somebody is cultivating for a very long period of time, okay, it means that that land cannot be cultivated by the person who is having ownership of that thing. ठीक है, वो और उसको घर के लिए नहीं चाहिए.
too much production is there. This is the reason that he had employed somebody to do it for generations. Okay, that was the logic. Even decade, 2 decades, somebody else is cultivating. It is too much land. Okay, and same individual is working in the same field. It means that he doesn't have land, so he should have his stake over some part. ठीक है, कुछ हिस्से पे उसका भी अधिकार होना चाहिए. 10 साल से खेती कर रहा है दूसरे के खेत में, इसका मतलब उसके पास खेत नहीं. So if he is doing everything, he should have right over some part of it. Okay, that was the thing. अब ये लैंड रिफॉर्म की बात आप कर रहे हैं. लैंड क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, बहुत आसानी से हो गया था, ऐसा तो है नहीं. एवरीबडी वाज फाइटिंग, स्टिल people are demanding what? New states. Everybody is demanding a new state, and this land is a state subject. ठीक है, right over the land is with state. at किस टाइप का समय था ये? आफ्टर इंडिपेंडेंस. the risk of there was risk of states demanding reorganization. और इवन सेसेशन फ्रॉम द कंट्री. कुछ लोग तो क्या है, हम रहेंगे ही नहीं कह रहे थे. दैट वाज अ टाइम व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. सो गवर्नमेंट वेंट विथ गो स्लो टैक्टिक. गवर्नमेंट इटसेल्फ डिड नॉट पुश फॉर इट. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द डे खुद ही उन्होंने कोशिश नहीं किया कि पता नहीं क्या हो जाए. Okay, they were afraid. Okay, so state is a. अब स्टेट के लोग क्या है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप इनजस्टिस कर रहे हो, आप हमारी जमीनें छीन रहे हो. दैट काइंड ऑफ एलिगेशन. मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक व्हाट? एजुकेटेड, पावरफुल, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. जमींदार तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता ही थे. ओके, आईएनसी के. एंड दीज पीपल फॉट फॉर द कंट्री. एंड नाउ नेहरू जी क्या थे? साथ वाले लोग जो आज़ादी के लिए लड़े, किसका किसका छीन लेंगे. सो द गवर्नमेंट इटसेल्फ डिसाइडेड दैट थिंग्स कैन गो हेयर, because already you know lot of things were happening, people were protesting, people were unhappy at. तो सबसे बड़ा हाँ अंकित बेटा, लोन लेने वाले. Now the moment this thing was declared, पहला तो क्या स्टेट सब्जेक्ट है, but the landlords and the people who had land, they went into fear कि everything will be snatched. So many of the tenants were thrown out of their land. ठीक है, so nationwide displacement of tenants started. That again लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए कि भाई आप ऐसा नियम ले आए कि हम सेंचुरी से हमारे रिलेशन अच्छे थे, हमें उठा के बाहर ही फेंक दिया, गांव से बाहर फेंक दिया. ओके, सो लैंडलॉर्ड्स टुक प्रिवेंटिव मेजर्स. अभी किसान को ज्यादा पता नहीं होता है ना, दे आर पुअर पीपल. And these landlords are like, they were more aware. इनके पास रेडियो है, टीवी है, गवर्नमेंट डिक्लेयर की, आपको पता चलेगा. By the time the administration can come into action, okay, many of the tenants were thrown out. Nationwide displacement.
of tenants. तो जो वहां कर रहा है वही करेगा. उन्होंने बोला आज के बाद हमारे खेतों में मत आओ, डोंट कम टू आवर फील्ड्स, वी डोंट वांट यू. ओके. देन इसी में क्या है, बेनामी ट्रांजैक्शंस दे स्टार्टेड विथ. So both the thing. Now these displaced people went against the government move. They were not secured. उनका नुकसान हो गया. बेनामी ट्रांजैक्शन, government did not had a remedy for this. Okay, so most of the landlords, like somebody is in UP, by exchange कर लो भाई land, same value of land MP में, महाराष्ट्र में. Okay, somebody from Maharashtra buy in Himachal. Okay, so various ways. बेनामी का मतलब अपने ही सिर्फ ये नहीं किया. When government tried to stop, exchange कर लिया, somebody else residing in some other state has control over this land. कुछ नहीं कह सकते, बहुत टाइम की बात है. Okay, so many measures were taken directly by the landlord to safeguard. Okay, now like lobbying, by landlords, many leaders themselves were landlords, politicians, landlords. Okay, so lack of political will was visible. ठीक है, आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपके 10 MLA भाग जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. Okay, this is something that was practical. Okay, most of the people who were into the seats of MPs and MLAs, they were rich people. ठीक है, not everyone, but most की बात कर रहा हूँ, वो rich लोग थे. उनका कोई ना कोई नाता जरूर था लैंडलॉर्ड्स के साथ भी. तो इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट. ओके, नाउ इसके बियॉन्ड क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इंप्लीमेंटिंग द कम्बरसम जुडिशियल प्रोसेस. implementation issues, everyone went to judiciary, this reason that reason. उनको पता था जैसे ही जाएंगे कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा खींचना. okay, after all the system, India has independent country, independent institutions तो नहीं थे. okay, these were the same institutions which British made. So they were functioning in the similar manner. 1860 IPC. Okay, so long drawn administrative and judicial process. Okay, those who had money, they were able to manage many things. Okay, so this again, land reforms की वजह से भी फिर प्रॉब्लम हुई. okay, आपको लगता है ये इम्प्लीमेंटेशन होने देगा? एंड ह्यूज रिफॉर्म कंट्रोवर्सी स्टार्टेड. उस पीरियड में क्या है, इट वाज अ पीरियड ऑफ कंट्रोवर्सीज. okay, whole world thought that India will not be able to survive. okay, everybody will go
Now some of the people said that actually the land reform will not lead to consolidation. It is leading to land fragmentation. Okay, because tenancy rights में क्या है? Somebody has this much land. Okay, now this part is cultivated by A, this part is cultivated by B. Okay, and this part is cultivated directly by the landlord. This again part is cultivated by the landlord. He has given this land to someone else, this to someone else. Okay, so Z is the landlord. He is himself doing some of the land. Okay, so क्या है? Ultimately, people said that tenancy rights due to tenancy rights. So instead of consolidation, in one of the things that the reform process is telling is tenancy rights. The other is consolidation. Both cannot happen. तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी होगी. Okay, लोगों ने किया कि government is infringing upon the fundamental right of the people. Right to land जो है, ठीक है, आर्टिकल 300 आज की डेट में जो है, at certain point in time land rights क्या थे? Fundamental right मान लिए गए थे. Okay, it was part of the fundamental right, and then the government had to make changes. तो land को fundamental right से हटाया गया. Government is infringing the fundamental right of people. And people went to court. Press, court, people, everybody going against the government. So government has no way of pushing this thing more. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द डे न्यू कि अगर लैंड को ज़्यादा टच किया तो हम प्रॉब्लम में आएंगे. ठीक है, हाँ, ठीक है बेटा. सो फंडामेंटल राइट नहीं रहने दिया गया. So mostly it failed. Consolidation is positive कि 33% हुआ, but mostly it was a failure. Okay, and the cooperative farming idea later अमूल में दिखाई देता है कि the same spirit is there which the government wanted to do, but exactly in that form नहीं, ऐसा नहीं हो पाया. Okay, the way they thought कि we want with respect to the land, वो नहीं हुआ. So everybody is clear? So Kerala and West Bengal, you can say कि some reforms were there. ठीक है, Kerala and West Bengal, rest of the part we cannot say. Okay. And Kerala और West Bengal में क्या था? It was not the same government. Okay, they implemented it with all the zeal. वो political pressure में नहीं है. Okay, यहाँ जो हमने बात लिखी, lobbying by landlords and everything. Kerala and West Bengal did not fall in this trap, so they were able to bring certain reforms. Rest of the states, not much. तो केरला और वेस्ट बंगाल की वजह से वो जो 2% दिखता है वो उन दोनों स्टेट की वजह से दिखाई दे रहा है. हाँ उषा बेटा, प्रोटेस्ट होते ही है, फार्म प्रोटेस्ट. ओके, होते रहते हैं. सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? हाँ ना.
All good? Think you can manage? मैनेज कर सकते हैं? Okay, now we'll look at beyond this some of the revolutions that happened. Revolution जब हम political terms में कहते हैं, okay, तो वो अलग है. यहाँ पे वैसा revolution नहीं हुआ है. Okay, revolution is always associated with bloodshed in political terms. ठीक है? Uprising may or may not lead to bloodshed. Revolutions always lead to bloodshed. लेकिन हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस की बात कर रहे हैं. So improvement in the agriculture, some of the methods that led to drastic improvement, okay, उसे हम क्या है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस के अंदर ले आते. Now the most famous one is ग्रीन रेवोल्यूशन. okay, ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं. So we'll do it quickly and you'll help me to navigate through this topic with ease. Okay, of course with your help. तो बताइए क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट यू नो अबाउट इट? व्हाट यू नो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या जानते हैं? ऐसा भी कोई बच्चा है जो मैंने कभी नहीं सुना? ग्रीन रेवोल्यूशन, revolution, okay, the term is used. No idea? The spectacular increase in the production of food grains. Revolution. Okay, revolution usually what? One form of government changing the other form. तो आपके पास 5 थे और 50 हो गए. This is spectacular rise. Okay. So this is one phase in agriculture which started in the 1960s, which had given a spectacular rise to the production of food grains. This phase is called as Green Revolution. हाँ के बेटा ये सब हुआ है. Okay. So this is a phrase which is used for this thing. And it happened at a time when India was designated as being the begging bowl of the world. Okay? बहुत ही बुरा टाइम था. Green Revolution, write down. This is a phase which describes. This is a phase which describes. हाँ क्या बेटा? This is a phase which describes the spectacular increase in the production of the food grains. Spectacular increase in the production of the food grains. A spectacular increase in the production of the food grains during the 1960s. During the 1960s. And this phrase, this term, and this phrase is still used to represent the enhanced production of food. And this phrase is still used to represent the enhanced production of food. Okay. Now, अगर कोई आपसे पूछता है why there was a need for green revolution,
why there was need for green revolution? क्या लगता है? नाइनटीन सिक्सटीज की हम बात कर रहे हैं. इंडिया क्या कर रहा था? चाइना वॉर, पाक वॉर. आप वॉर पे जाएंगे तो क्या होगा? डाइवर्जन ऑफ फंड्स. और ये 1960s कौन सा पीरियड है? ड्रॉट ईयर्स इन इंडिया. So India was facing drought. India was at war. So funds were diverted. Drought से बच पाते क्या इंडिया? So food deficit in India. So purely agricultural country, okay, a land which was known for agriculture, क्या हुआ? Food deficit in India, famine like situation was there, okay. US started influencing our internal policies, okay. India's image was projected as begging ball. Okay, कटोरा लेकर मांग रहे हैं, ठीक है. ऐसी सिचुएशन हमारी हो गई थी, ओके. एंड बेगिंग बॉल किसको कह रहे हैं? एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ओके. दिस इज ऑल्सो ए पीरियड. अब इंडिया लाइक कंट्री wants food, तो food prices increased in the international market. US helped us. Okay, India was not in a position to buy that thing. So US offered us help and started influencing our policies. So this is what? Insult to an agri-based nation. Okay, we had so much land that we could feed the whole world, and we were projected as begging ball. Okay, and this made our leaders to search for alternatives. कि खेती कैसे अच्छी की जा सकता है. Okay, so in order to protect the self-respect of the country, green revolution was brought to India. Okay, this revolution was not only related to food production. This revolution is important because it is associated with the self-respect of the country. It is not only about food. Okay, we were insulted, we were called begging ball. So through this green revolution, we not only
became sufficient to feed ourselves. Okay, but we are also helping nations in distress. ठीक है, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो हमने लोगों को ब्रेड खाने का मौका दिया, बिकॉज वी सप्लाइड वीट टू देम. ओके, हाँ शुभम बेटा, PL480 बकवास, जो जानवर भी ना खाए वैसे ग्रेन्स उन्होंने दिए थे. ठीक है, यूजुअली दैट दे फीड टू देयर पिग्स, दैट वाज प्रोवाइडेड टू इंडिया. दे इंसल्टेड अस. ओके, सो इंडिया went for green revolution. Okay, and at that point in time some of the things were happening. Mexico, which was neighbor of US, it were able to get this thing done. ठीक है, green revolution कर पाने में they started with some of the high yielding varieties, some experiments, and they were able to manage it. Okay, and we benefited from it. So we'll continue with this discussion in our second session. ठीक है, तो आज ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस विल बी फिनिशिंग. ओके, बिकॉज दिस इज एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हो रही है अब, तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है. ओके, लेकिन बेसिकली क्या है, एवर लगा देने से भी क्या है, वो ग्रीन रेवोल्यूशन रहता है. ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं लगा हुआ है, द टारगेट इज टू पुश द प्रोडक्शन. ओके, एंड दैट इज सम ऑफ द ड्रास्टिक चेंजेस. थोड़ी बहुत तो क्या है हम कर ही पा रहे हैं, but using methodologies which can bring drastic change in the total amount of production that is happening, we associate that thing with green revolution. Okay, all good, clear है सभी को? Ankit beta, it is going to be little different. You'll have to focus on the current affairs related to the very state that you'll plan to appear for the exam, right? For the very state PCS you'll be opting to, you'll have to read some of the news related to the state. Okay, some of the policies related to the state. So editoria, you can see editoria, most of the people prefer that. ठीक है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है, बट लोग कहते हैं कि वो अच्छी है, तो आप उसको देख सकते हैं. CA for UPSC, some of the things are going to be common, right? कुछ चीजें तो कॉमन ही होंगी. The nature of question, the frame of the question will be different in states. States they have relatively direct question. UPSC tricks a little. Okay, ज़्यादा changes नहीं होते. Okay, I hope it is clear. अंकित, नहीं मैगजीन नहीं पढ़ना है बेटा, पूरा का पूरा मैगजीन डिफरेंटली नहीं, वो आता है ना ईयरली कंपाइलेशन टाइप का. You just have to focus on those compilations. वो किसी का भी आए. Some of the specific news in 40, 50, 70 pages related to the state, some big news and everything. Okay, घटना चक्र और monthly magazine for state, monthly magazine for UPSC. I don't think that is a good idea. Just have to make sure that last में जब आता है एग्जाम से एक महीने पहले, some of the compilation will be available in the market. You just got to pick that, prepare that thing, and in order to do that you'll have to make sure that you are prepared with rest of the topics 1 month before the exam. ठीक है, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा समय देके करंट अफेयर्स, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद कर पाए आखिरी 15-20 दिन में. अंकित बेटा, आई बिलीव इन दैट थिंग. मेनी ऑफ द पीपल मे बी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि साल भर लेके पढ़िए, बट आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड आइडिया. फॉर 10 क्वेश्चंस ओनली, व्हाई विल बी रीडिंग होल ईयर? 12 मैगजीन और क्यों पढ़ना है? सो आई थिंक you should go for that. Okay, so we'll continue again 11:30. Okay.
So have your breakfast and come back 11:30. We'll be discussing some more topics. We'll be looking at the questions as well. Okay, in these topics, I'll focus on how you can write the answers. Okay, because यही topic है जिसमें सब बोलते हैं कि tough आया. It ain't is going to be tough. Okay. Subhadeep. Okay, Subhadeep. देखिए बेटा, ये the question that you are asking, low pressure. Pressure is what? ये तो पता होगा शायद सुबोधीप. Rest of the people you can leave. Okay, I'm just सुबोधीप को help कर रहा हूँ. Low pressure. Pressure क्या है? The amount of weight that you are feeling over your head. 5 kg, 10 kg, 15 kg. If you compare 10 kg with 15 kg, it is low. But when you compare this 10 kg with 5 kg, it is high. So high pressure or low pressure, it is relative. High है मतलब बहुत ज्यादा सर पे भारी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ऐसा नहीं है. Okay? So book में जहां भी आपने पढ़ा है, wherever you have read about the pressure situation, pressure, that cloud is there. Low pressure का मतलब क्या है? The air which is on the ground, let us say ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, ये लो प्रेशर है. तो लो प्रेशर का मतलब क्या है? यहाँ जो हवा है वो कहीं ऊपर चला गया, यहाँ पे हवा है नहीं, इट इज नॉट हियर. ओके, सो व्हेन इट इज गॉन, सो लेस एयर इज हियर. और ये ऊपर जा रहा है तो क्या है? मॉइस्चर है. ओके, पानी भी जाएगा. एवरी जो हम सांस लेके बाहर आ रहा है, our breath also has water vapor, though we cannot see, we cannot experience, but the air that you are taking inside, it has vapor. The air that is coming out of my nose, my mouth, it has water vapor. So this forms cloud. So one of the situation that you have read is explained. जब low pressure होगा तो cloud दिखाई देता है, but it is not like कि wherever there will be low pressure there will be cloud, because it is comparison. Okay, this is world, this is your village. ये भी नहीं है, it should not be visible. So something happening here. यहाँ क्या है? हाई प्रेशर है टोटल, लेकिन रोड पे क्या है? नीचे कंपैरिजन बगल बगल में लो प्रेशर भी हो सकता है. ओके, लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया इज कंपैरिजन. लो प्रेशर का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां हवा नहीं है. ओके, इट इज कंपैरिजन फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया. अभी आप क्या है कि बड़े हो. ओके, मेरा बड़ा बेटा है ऐसा बोलते हैं लोग, छोटा बेटा है, दैट इज कंपैरिजन. ओके, बड़ा बेटा किससे? कोई छोटा होगा तभी तो वो बड़ा होगा. So low pressure, high pressure is comparative. Okay, and I've explained this thing 5-10 times. I don't know why you have this question. Haven't you attended this climatology lecture, Subhadeep? Now you have understood. But this thing I have explained so much in detail in climatology. I don't know whether you saw that thing or not. These are easy things. Go through climatology, you'll understand. Okay? Great. समझ में आ गया, ये अच्छी बात है. Okay, so we'll meet again 11:30. Everyone, stay blessed. Come back after having your breakfast. We'll meet again at 11:30.